Hi Nandini, please introduce us about yourself. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, my name is Nandini Sharma. I was born in UP Hathras, thereafter shifted to Alwar, did my schooling from Alwar itself, and then I pursued BA LLB honors from MIT University Noida, and I completed my IPR LLM from NLU Jodhpur, and thereafter I have been preparing for judicial services examinations, sir. Okay. Nandini, what was the topic of your dissertation for LLM? So I did my dissertation in Cotadoria and Molela clay geographical indications, sir. How geographical indications have affected both these products. Okay. Uh, and what was the hypothesis? So it was whether geographical indication has have positive impact on these products, or whether it creates no impact on these products, or it can is uh, has it economically been feasible for them? And for this, have you done empirical research or doctrinal? The empirical research. So And what was the conclusion of your research? in conclusion, I what I draw conclusion in my dissertation was there was very in with respect to consumers, there is very little knowledge about geographical indications, though the purpose of geographical indication has been served to some extent because it has prevent the misuse of these molela clay and Kota Doria work. But with respect to economic criteria, there has been not much economical impact of geographical indications on these both products. ये मोलेला clay का मतलब कि what is the use of it? Like what is the primary use of this type of clay? So Molela clay work is basically a terracotta work, and they're situated near Nathdwara, Udaipur, Hmm. and they're known for their lightweight terracotta work. So, and the work is primarily used by villagers during festivals, idols making, and the basic quality of Molela clay work is that they're hollow structures, so which makes them lightweight. So, when you carried out this research, was it under consideration or was it a moot point in those point of time कि वहाँ पे आपके लिए जो research करने के आपको incline है या फिर what made you to choose this topic? So, actually, I did my LLM while COVID, so I couldn't physically go over there, but I talked to artisans and weavers in Kethun. So, actually, it was close to my Jodhpur, so therefore I chose these two places. Okay, so ठीक है चलिए तो आपने कहना है कि आपने empirical research करी but you did your LLM during COVID. So how did you carry your research in the times of COVID then? Yes, sir. So during 6 months prior to COVID, I had my college, and then 6 months I did from home. But So generally, when the LLM is of your 1 year, you like choose a topic in the first semester. You start conducting research, but the research is not like uh, that in depth in the initial days. Like first semester में उतनी deep research नहीं हो पाती है and तो वो आपका later semester के part में ही होता है तो you have done empirical research then how do you support this data when you were sitting at your home in COVID times? that was a challenging part of this dissertation to connect. It was more of a snowball type of thing. When I connected with one person, one artisan, he referred me to another, and this is how I And like got. this, how many artisans did you connect with? I had conversation with approximately 20 artisans. So. Okay, ठीक है चलिए. So you have chosen a topic which is more inclined towards corporate law. Like you have done your LLM from corporate law.
because IPR is a part of that corporate industry. So what made you choose judiciary? Like you could have like opted for like institutional teaching, or you could have like started working in a law firm dealing with specifically IPR related issues. Then what made you choose judiciary? The judiciary has always been my plan A, and I have always dreamt to be part of this system. I chose LLM in IPR because I had IPR in my during my BA LLB also, and uh, वो तो I सभी के want सब्जेक्ट का होता है पार्ट. yes, sir. So I had an interest in LLM IPR subject. So I had to do. It was a dream for me to do my LLM in IPR branch itself. Okay, okay. What is novelty? So novelty is a concept under patent law, which is one of the essential ingredients, which means that the invention should be new and it should not be in a public domain and it should not have been anticipated by the public prior to the disclosure of the invention. Okay. And what is a trade secret? So trade secret is a secret which is confidential and very limited number of people in an organization are aware of it, and as such there is no comprehensive legislation regarding trade secrets, and it is but yet it is a part of intellectual property rights. Okay, okay. ठीक है. What do you think about yourself that will help you out to be a judge? So, I believe qualities of a judge include being patient, being calm, composed, listening to all the parties, and forming a rational judgment. And I believe that not all, but I might have few of the qualities which can help me in this profession, sir. And what all qualities do you believe that you have? So, I believe I'm calm and composed. I'm I listen to people and then comprehend things and then make my own analysis on the basis of what I heard, sir. Okay, okay. What all subjects have you read for this examination? So civil civil law and criminal law and local laws. So, ठीक है. How do we collect the arrears of the land revenue under Madhya Pradesh Land Revenue Code? so as of now, I have not read local laws. So for this interview, Post I स्टडी am में आप मतलब कि were you involved in any profession or you were just preparing for the examination? so I have been preparing for examinations. So. So like you have never gone to court. Are you a registered advocate Yes, sir. and you haven't like visited the court? So I when I get free from exams, so I do visit court And what sometimes. type of matters do you deal with? So POXO related matters, negotiable instrument related matters. ठीक है. What is mandatory reporting under POXO? Uh, yes, sir. So section 19, 19 to 23 deals with the reporting of the matters. The section 19 provides that any person who has a knowledge of any incident that is likely that has occurred or is likely to occur. So there's a obligation on the he can report the same to special police juvenile unit or the local police. And other than that, Section 20 also imposes obligations upon certain people to report the matter to the special juvenile police as well as the local police. Okay. And what if a person does not report the matter? So, if the person does not disclose the matter, so it is a penal offense which is punishable under Section 21, sir. 6 months imprisonment, which may extend to 6 months, or fines. Okay, Nandini, let's take a hypothetical situation. Um, there's a person, there's a doctor, and that doctor has committed an aggravated sexual assault upon a child,
who is like in her 11th class. That child made a call to the wife of a doctor and said कि आंटी अंकल ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया. And what the lady does, the lady uh, admonish the child self कि उसने उस बच्चे के साथ ही डांट फटकार करी. कुछ दिनों बाद when the child reported this matter, an FIR was lodged against the doctor, and subsequently the police submitted the charge sheet before the court of session. While perusing the charge sheet, the sessions judge found that the matter was reported to the wife of the doctor, who herself is a doctor. Now, can the sessions judge proceed on the basis of the statements made by the victim in the course of investigation against such like against the wife of the doctor? First thing. And if the sessions judge can proceed, then under which provision of CRPC can he proceed? Can I just take a second? Yeah, sure. If you want, then I can repeat the question as well. So under POXO, she will be punishable under section 21. 21. And under and yes, session court can take cognizance against the wife of the doctor because she was under a statutory obligation to report the same, and there was a failure on her part to report. And under CRPC, I cannot recall the particular section, sir. Okay. Nandini, what do you mean by additional prosecution? Sorry, sir. Additional prosecution. So, Okay. What do section you mean by 319 yes, CRPC. section 319? Can you please explain it? Yes, sir. So, if the court during the trial is of the view that a person who prima facie has not been named as the accused appears from the evidence to be involved in the crime, and so the court can proceed against the person. And if the person is present in the court can detain that person. And if the person is not present in the court, the court can issue arrest warrant against the same and proceed against the person, sir. Okay. Nandini, one more thing. Can the sessions judge proceed against such accused lady under section 319 when the charge sheet was when the case was committed to the sessions judge? Sorry, sir, I'm not aware as of now, sir. Okay. Um, can you please discuss appeal against acquittal under CRPC? Yes, sir. So appeal against acquittal is a right which has not been given to victim, but it has been given to state government as well as central government. Sorry, and district magistrate. The provision is been provided under section 378 CRPC. It provides that DM can direct the public prosecutor to file an appeal against the conviction against the acquittal in the court of session, and state government can direct the public prosecutor to file an appeal against the acquittal in the high court. And similarly, in certain situations, central government can also direct the public prosecutor to file an appeal against the acquittal in the court of session as well as high court. A complainant can also file an appeal against the acquittal with the leave of the high court, and such leave should be application should be filed within 60 days in case of public person, and in case of public officer, it should be filed within six uh, 6 months, I guess. ठीक है.
Can there be an appeal against acquittal in case of order of acquittal while exercising the revisional jurisdiction? Yes, High Court, an appeal against acquittal can be filed in High Court if a court of session has revo- uh, against the revision order passed by court of session. Okay. Uh, ठीक है. One last question from my side. That will be a twofold question. First part of it. Can an order of acquittal be appealed by a victim under CRPC with respect to a negotiable instrument case? First thing. If not, then is there any specific provision under which appeal against acquittal can be made in case of a negotiable instrument? So Section 372 CRPC proviso. It provides only three grounds on which a victim can file an appeal. Firstly, being in case of less conviction on a lesser sentence, and secondly, in cases of yes, sir, a person can file an appeal against acquittal, sir, ठीक है. and yes, sir. But a specific provision regarding appeal against acquittal has not been provided under Negotiable Instrument Act itself, sir. Okay. चलिए, that's from my side. Shivani ma'am. Hi, Nandini. Am I audible? Good. Yes, ma'am. Nandini, tell me, under NIA, how examination of complainant is done and the witnesses is done? Ma'am, under an Negotiable Instrument Act, it provides that an examination of a witness can be done by affidavit, and it can be read into evidence if the in subject to just provisions, ma'am. But if the opposite party demands on application, so the court is bound to court shall call them from cross examination. Don't you find this contradictory? What are other provisions which talk about examination of witnesses and complainant? Can you recall any section from CRPC? Yes, ma'am. So Section 273 CRPC, it provides that all the evidences during the trial are to be taken in presence of the accused. So this is uh, this is an exception to this principle. But however, uh, for just convenience and for the speedy trial, given the nature of negotiable instrument, the purpose behind Negotiable Instrument Act, which was to provide a summary and summary remedy to the complainant, this provision has been inserted, ma'am. Do you understand the amendment of pleading? Yes, ma'am. Yes. Order 6, Rule 17, CPC, it provides for amendment to pleadings. It provides that the court may allow amend and to alter the pleadings if for the purpose of determining the real question on the controversy. The proviso provides that after trial also the court may allow amendment if even after due diligence of the party could not present the party could not have added the added that thing in his pleadings. Are inconsistent pleadings allowed? Yes, ma'am. In certain situations, inconsistent pleadings may be allowed by the court, but however, this is subject to provisions that it should not completely alter the nature of the case itself, sir. Can you give an example of inconsistent pleadings?
Ma'am, for instance, in a case, a plaintiff is pleading uh, on the basis of he's asking for cancellation of an instrument, and on the same hand, another relief he's asking for a specific performance of a contract. So this, in a way, is inconsistent pleading. He cannot ask for two different alternative reliefs which are inconsistent. What do you understand by time is essence of contract? And Section 55 of Indian Contract Act, it lays down that when a time is of essence, so in case of a breach, the other party gets a right to either repudiate the contract or he has an option to claim compensation for the injury. And on the other hand, in a contract where time is not of essence, so other party does not get a right to repudiate, but he can ask for compensation. In cases, generally, it is believed that in cases of immovable property, time is not of essence. But however, whether time is of essence or not, it depends upon the intention of the parties. Sir, it was stated that immovable properties are not, time is not essence in such cases. It has been held by Supreme Court in numerous cases. Uh, I cannot recall the case name, ma'am. Nandini, why you want to be in judicial services? Ma'am, coming from a non-legal background, judiciary, I only had limited knowledge about this field. But during my law college as well as my internships, whenever I used to visit the courts and whenever I looked upon judges and their way, and I when I saw how a single judgment can reinforce a person's belief in justice, as well as how it helps to secure rights of numerous people. So it reinforced, it ignited that fire that I also want to be a part of this judicial system. What do you understand by the responsibilities that judges hold? Ma'am, judges are under a responsibility to secure rights of the people, and people look up to them as institution of last resort. They have hope that their rights will be protected. They will be heard by the judges, and they'll get justice. And Why do you say that judges are supposed to protect the right of the people? The court, Indian courts are court of evidences. So if a party doesn't have evidence to prove their fact, to prove their uh, rights, how come the judges are going to protect it? They're under no obligation. ma'am, it is believed in our Indian judicial system that judges are not mere spectators. They are they are it they aid in securing justice. So in case they are bound to give judgment on the basis of evidence, no doubt, but they are in a way they try to secure justice in whatsoever manner they can, ma'am. We'll end your interview here, Nandini. We'll move forward with the feedback, starting with Chinmay sir. Chinmay, mute हो. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि व्हेन यू आर सेइंग दैट व्हाई यू वांट टू परस्यू जुडिशरी, like this question was apparently and intentionally repeated. आपने पहली बार में कुछ और जवाब दिया, दूसरी बार में कुछ और जवाब दिया मेरे को ही, मैंने ही 2 बार ये सवाल पूछा, एंड व्हेन शिवानी मैम ने जब ये सवाल पूछा एंड रिफ्रेस करके सवाल पूछा आपसे, तो यू आर ट्राइंग टू गिव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड आंसर. तो
You have to have a very decent answer already prepared, first thing. Second thing, when I'm asking ki, are there any qualities of a judge and do you have those qualities? Like you will be presenting yourself before a recruiter. He's going to be your employer at the end of the day. So you have to have those qualities of a judge and you have that like आप ये मान के चलो कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए वहाँ पे उन क्वालिटीज को जज के सामने पैनलिस्ट के सामने रखने की जिससे वो सेटिस्फाई हो सके कि यार जो क्वालिटीज इसने बताई वो क्वालिटीज इसके अंदर है अब वो क्वालिटीज ही नहीं जानते थे देन इफ यू डोंट नो व्हाट आर द स्किल सेट्स रिक्वायर्ड टू बी अ जज तो वो थोड़ी दिक्कत जाएगी वहां पे रिक्रूटर के सामने बताने के लिए दैट यू हैव दोज स्किल सेट्स समझी तो इस चीज को वहां पे आपको रखना पड़ेगा तो ये वेरी क्लियर कट आंसर शुड बी देयर नो शुगर कोटिंग कि मेरे को न्याय करना है मेरे को सामाजिक सेवा करनी है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए very crystal clear. Like if you have appeared last time before the panel, then you might be remembering there was Justice Anjali Paulo and Justice Vishal Mishra. They were grilling the students जब वो इस तरह के जवाब दे रहे थे तो वो एक बहुत गंदा सीन फंस जाता है एंड काफ़ी इंटिमिडेटिंग वे में वो वहाँ पे सवाल पूछ रहे थे तो फिर ऐसे टाइम पे इन सवालों के बहुत क्लियर कट आंसर होने चाहिए जहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर दिखे दूसरी चीज़ भाई जो डिसर्टेशन था उसे देख लो Yes, sir. कोविड के टाइम पे कैसे एम्पिरिकल रिसर्च हो सकती है वो एक बहुत बड़ा इशू था वहां पे अलग समझ में आ गया था यू आर लाइक आप भले ही करे होगे रिसर्च लेकिन जब कोई व्यक्ति सामने बैठा हो उसे लगेगा कि यार ये तो मूर्ख बना रहा है तो बी वेरी क्लियर ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं कोविड था एम्पिरिकल रिसर्च करी गए वहां पे लोगों से डिस्कस किया लगभग सर्वे किया 30 लोगों से डिस्कस किया क्वेश्चनर तैयार किया था उस क्वेश्चनर के आधार पर हमने वहां पे अपना काम किया नंदनी आई थिंक वीडियो गॉट स्टक am I audible to you Nandini properly Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो समझ में आ रहा है ना कि मतलब सी honestly speaking like this feedback won't be going live तो I can tell you one thing वैसे तो कहा जाता है आपको इंटरव्यू में ऑनेस्ट होना चाहिए जो कुछ भी है सब कुछ सच बोलना चाहिए लेकिन देर इज नथिंग विच यू कांट फेक ठीक है तो अगर आप कुछ फेक कर रहे हो मतलब 100% तो आप फेक कर ही नहीं सकते हो पहली चीज अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ फेक कर रहे हो आपको उसका A to Z चीजें पता होनी चाहिए पीपल हैव फेक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द इंटरव्यू एंड दे क्वालिफाइड दिस एग्जाम ठीक है तो वहां पे अगर आपने नहीं किया फेक दैट इज अ गुड थिंग आपको उन सवालों के जवाब पता होने चाहिए Yes, sir. अभी चूंकि लॉ में आपको है नॉलेज मतलब व्हाट आई कैन परसीव आपने कुछ समय से सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है तो वो चीज़ है दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो फंसने वाली थी कि यू आर सेइंग दैट यू हैवंट डन एनीथिंग सी आपने अपने डेफ में ना अपने एनरोलमेंट नंबर लिख रखा है एंड दिस एनरोलमेंट नंबर फॉर श्योर विल बी फ्रॉम 2019 और 2020 Yes, sir. एंड दे वुड बी एक्सपेक्टिंग कि बंदे को अगर ग्रेजुएट हुए 5 साल हो चुके हैं then the candidate must have visited court not on daily basis but very oftenly ठीक है तो वहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके रखो कि किन चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहे आप सीनियर के साथ काम कर रहे थे और सीनियर से तो कुछ क्या रहता है मैं आपको बता रहा हूँ आप 4-5 चीज़ों को बना के चलो कि यू वर इनटू ड्राफ्टिंग बेल एप्लीकेशंस ठीक है इस तरह की चीज़ हो गई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नोटिसेस ड्राफ्ट करने वाली चीज़ है यहाँ पे आपके पास अभी समय है अगले 4 से 5 दिन कुछ मत करो एक अच्छे एडवोकेट को पकड़ो आप उससे पूरा A to Z चीज़ें सीख लो दैट्स व्हाट कैंडिडेट्स डू एंड दे आर डूइंग राइट नाउ जो पिछले 4-5 साल से ग्रेजुएट हो चुके हैं एनरोल्ड है बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो मेक द बेस्ट मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम किसी भी वकील को पकड़ लो एक दिन और उससे पूरी इंट्रिकेसी सीख लो कि अच्छा बता दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस को फाइल करने का पूरा प्रोसीजर बता दो पहली चीज क्योंकि वहां पे जो लॉ आर्ग्यू करना है वो तो आप पढ़ चुके हो ना बेयर एक्ट में है कि नहीं फिर आप ये पूछ लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिमिनल केसेस में आपने बोला पॉक्सो मत करो फंस जाओगे इस जो मैंने आपसे सवाल पूछा था इसका जवाब भी मैं आपको दे दूंगा टेक्निकल चीज़ों पे मत जाओ कि अरे मैंने ये केसेस
बेल एप्लीकेशंस का आप बोल सकते हो कि आई यूज टू ड्राफ्ट बेल एप्लीकेशंस, आई यूज टू आर्ग्यू इन बेल एप्लीकेशंस, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोई आपसे ऑर्डर शीट वगैरह तो मांगी नहीं, दे हैवंट आस्क्ड फॉर ऑर्डर शीट, ठीक है, वो वाला क्राइटेरिया हट ही चुका था आपके टाइम पे, तो ये चीज़ है ही नहीं, तो एक वकील को पकड़ो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज व्हाई एम आई टेलिंग टू यू बिकॉज यू आर ग्रेजुएटेड इन 2019, so this might come up ki are you a practicing advocate or not, and if you will be able to like present yourself before the panelists like you have been practicing for this period of time, तो थोड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इन सिलेक्शन के चांसेस। आप देखो नंबर ऑफ सीट से कम ही है कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, दैट इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको वहाँ पे रिक्रूट किया जाए, लेकिन आपको पता है एमपी की हिस्ट्री रही है इंटरव्यू में फेल करने की, Yes, sir. तो लाइक वहाँ पे ये चीज़ फंसनी नहीं चाहिए, तो इस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, सवाल ये था, ये 2021 के इंटरव्यू के टाइम पे सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये जो जजमेंट आए थे, दीज टाइप ऑफ जजमेंट्स वर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन दैट इंटरव्यू। तो आपको क्या करना है, मतलब जो भी आपके पिछले 5-6 महीने के लैंडमार्क जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट में, फॉर एग्जांपल एफआईआर को लेके इमरान प्रतापगढ़ी का जजमेंट था सेक्शन 173 को लेके, whether registration of FIR is mandatory in India right now or not, तो go through that judgment। जो भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट है, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम में न्याय संहिता में उतने जजमेंट्स नहीं है, लेकिन नागरिक सुरक्षा संहिता में सिविल प्रोसीजर के आपके जो भी जजमेंट्स है, कुछ 6-7 महीने के अच्छे जजमेंट रख लो, और खास करके अगस्त सितंबर के लैंडमार्क जजमेंट्स को गो थ्रू देम वंस, क्योंकि दे माइट बी आस्किंग दोज क्वेश्चंस, क्योंकि पिछली बार भी चल ही रहा था एमपी में, एक दिन पहले के भी कोई जजमेंट पूछ ले रहे थे। फिर ये चीज़ हो गई, लाइक यू हैव टू शो दैम यू आर प्रैक्टिसिंग एंड देयरफॉर यू आर कीपिंग योरसेल्फ अप्रेस्ड विद द लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स, तो आपका वो चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी वहाँ पे। अब जब मैंने आपसे सवाल पूछा था, सेक्शन 193 एक सीआरपीसी का सेक्शन हुआ करता था कि नो कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अनलेस द केस इज कमिटेड टू इट। तो लाइक जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस का कमिटल हुआ है एंड on the basis of the statements made to the police, the court of session is satisfied that there is an accused person who has committed an offense and can be tried jointly with the accused। तो सेक्शन 193 जो कि बीएनएसएस में अब सेक्शन 213 है, उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन कैन एडिशनली प्रोसिक्यूट दैट पर्सन, और उसमें एक जजमेंट है धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नहीं धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2013 का जजमेंट है। तो ये जजमेंट्स धर्मपाल हो गया, हरदीप सिंह हो गया एंड सुखपाल सिंह खेरा, ये 3 जजमेंट्स हैं जिन्होंने एडिशनल प्रोसिक्यूशन के कंसेप्ट को ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर किया, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड रेस्ट दोज वर माई क्वेश्चंस। तो हाँ, जो भी आप प्रोविजन दे रहे हो, जैसे मैंने विक्टिम की अपील की पावर पूछी, जानबूझ के पूछी, क्योंकि आपने ये बोल दिया था कि विक्टिम अक्विटल के केस में अपील नहीं कर सकता, तो वहाँ फंस गए थे। तो try to stay calm and composed because you have told that one of the qualities of a judge is to stay calm, which you are losing। तो stay, ठीक है, शिवानी मैम। या मोस्टली नंदिनी, चिन्मय सर ने आपको सारे फीडबैक्स दे दिए हैं, तो ऐसे कुछ अलग नहीं बताने वाली हूँ मैं, बस ये बोलूंगी प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंशियल लॉ अच्छे से रिवाइज करो अभी आप, है ना। आपको बेसिक्स आते हैं, प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, ऑब्वियसली तभी निकाला है जब आपको लॉ आता है, तो आपको लॉ आता है, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ प्रोसीजर्स, क्योंकि आप देखो उन्होंने प्रैक्टिस मांगा है, मैंडेटरी कर दिया है, ऐसे में जैसे सर ने बोला कि 2019 के ग्रेजुएट हुआ, है ना, और अब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई एनरोल्ड एडवोकेट है तो उसको बहुत हद तक प्रोसीजर्स पता होने चाहिए कोर्ट के, तो बहुत बेसिक से प्रोसीजर्स वो इस बार इंटरव्यू में पूछने वाले हैं, मतलब ये उनका मेन क्राइटेरिया रहेगा कि कैंडिडेट्स कम है ना, तो यहाँ पर वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वो बच्चों का सिलेक्शन हो जिनको लिटिगेशन की निटिलिटीज पता हो, तो वो चीज आपको प्रिपेयर करके जानी है। दूसरी बात ये, जब क्वेश्चन को सुन रहे हो, ठीक है, तो आंसर करते समय विच एवर लैंग्वेज यू थिंक बेस्ट एक्सप्रेसेस योर आंसर, चूज दैट। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी, choose Hindi. If you're comfortable with English, choose English. But don't give an answer in a language in which you are not comfortable, ठीक है, तो वो आपके आंसर को बिगाड़ देगा।
जहां पे लग रहा है कि फंस रहे हो, कुछ भी हो रहा है, या जहां पे आपको अपना मोड चेंज करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। इस पे कोई बार नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश एक साथ नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है। दूसरी बात ये स्ट्रक्चराइज और आंसर्स। प्रोविजन को स्टार्ट करने से पहले कोई कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा है, बताओ कौन से प्रोविजन कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके बाद अपना आंसर शुरू करो। आंसर्स वहां मत करो जहां पर नहीं आते हैं। जो मैंने आपसे एफिडेविट वाला क्वेश्चन पूछा था, सीआरपीसी से कॉन्ट्रडिक्टरी है एनआईए, जहां पर कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिनेशन ऑन ओथ किया जाता है, बट एनआईए कहता है कि एग्जामिनेशन ऑन एफिडेविट भी चलता है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है और अभी तक भी इस पे कोई रूल स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो ये दोनों प्रैक्टिस होती है आज भी कोर्ट में। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर नहीं पता हो वहां पर बिल्कुल बोलो कि सर आई हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रोविजन और लॉ, आई विल रीड अबाउट इट बट स्टिल आई वांट टू ट्राई एंड गिव दिस आंसर। तो जहां पर आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हो, जहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, वहां पर पहले एक राइडर लगा दो कि ये सिचुएशन है। कल को अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो उनको ये नहीं लगेगा बच्चा ओवर स्मार्ट बन के आंसर दे रहा है। उनको ये लगेगा कि हाँ मतलब नहीं आता है, एक्सेप्ट करके आंसर दे रहा है। तो अगर वहां पर आप गड़बड़े भी जाते हो ना, तो वो आपके नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं शो करता। ठीक है। कहीं पर भी लगता है कि आंसर बिल्कुल ही नहीं आता है, तो बिल्कुल बोलो कि सर आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, आई विल रीड अबाउट इट। बट जहां आता है, कंफ्यूज हो, तो बता दो कि सर आई हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग बट स्टिल आई वांट टू ट्राई गिविंग दिस आंसर। ठीक। दूसरी बात ये, व्हाई यू वांट टू बी अ जज। तो जो आंसर आपने बाद में दिया था वो फिर भी ठीक था। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुडिशरी में जाते हैं, तो उनको तो ये पता है कि ये सर्विसेज लोगों को नौकरी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, सस्टेनेबिलिटी दे रही है, पावर दे रही है, डिग्निटी दे रही है। आप सर्विसेज को क्या दे रहे हो? तो आपको ये बताना है कि आप सर्विसेज को क्या दोगे। और वो दिखाने का मतलब ये है, ये बताना कि मतलब जो जुडिशरी है, जैसे आपने बोला कि मैंने इंटर्नशिप करी, वो आंसर बिल्कुल सही था कि मैंने इंटर्नशिप करी, मैंने जजेस को देखा, आपने वुमेन जजेस के एम्पावरमेंट को देखा, जिस डिग्निटी के साथ वो जजमेंट्स देते हैं और री करते हैं लोगों के राइट्स को, तो वो सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज है। भले ही वो सेटिस्फैक्शन बहुत सारे ऐसा नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जजेस के ऊपर, भले ही वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन आई थिंक वो सबसे बड़ा है। और वो आपको जुडिशरी में देखने को मिला। तो आप कुछ इस तरीके का अपना आंसर फ्रेम करो। बोलो कि हाँ, ये सिक्योरिटी भी वुमेन के लिए बहुत बेस्ट चीज है, सस्टेनेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन साथ में ये भी है। और मैं वहां पर जो क्वालिटीज मुझे लगती है, अ, मेरे पास क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग है, और वो सारी चीजें मैं अपनी जजमेंट में लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा अपने आंसर को फ्रेम करो, अपनी डेजर्टेशन को अच्छे से पढ़कर जाओ। और यही पहन के जाने वाले हो आप? यस मैम। ठीक है, अब इस पे तो ब्लेजर। कोट, हाँ इस पे कोट डाल लेना और अपने बालों का बन बना लेना, डोंट मेक अ पोनीटेल। ठीक है। और नो एसेसरीज, कान में आप छोटे स्टड्स डाल सकते हो, वो चलेगा। एसेसरीज कुछ नहीं पहन के जाना, वॉच भी नहीं। ठीक है। यस। और आई थिंक आपको बेसिक एटिकेट्स कोर्ट रूम के तो पता ही है, नॉक करके जाना है, जब तक ना बुलाए अंदर नहीं जाना है, जब तक बैठने के लिए नहीं बोले नहीं बैठना है, ग्रीट करो जब तो पहले वुमेन जजेस को करो, और एक साथ पूरे पैनल को ग्रीट करो। और जब तक नहीं बैठने के लिए बोले नहीं बैठना है। इंट्रो वो पूछे तो ही देना, वरना इंट्रो मत देना। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली लॉ क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रो पूछते ही नहीं है। तो बस ये कुछ चीजें हैं। लॉ अच्छे से पढ़ो, ब्रशअप करो, आपको लॉ आता है, आपके पास बहुत हाई चांसेस हैं ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो वो 15 मिनट में आपको अपना बेस्ट वर्जन देना है। और जहां आंसर नहीं आता है वहां गलत नहीं देना है। और किसी क्वेश्चन में फंस भी जाओ, कोई बात नहीं, सब फंसते हैं, बट वहां पे हमें जबरदस्ती आंसर नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। तो अभी समय है और इंटरव्यूज दो, और फिर समझते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। चलो, ओके नंदिनी। I आप, have हाँ, regarding MPGK, how to prepare MPGKs, ma'am. आई थिंक एमपीजीके के लिए कुछ बहुत ज्यादा ऐसे मोटी बुक्स रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। पुणेकर आती है, अरिहंत आती है, उसमें से
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। एक तो ये कि रिसेंट अवार्ड्स क्या रहे, फेमस पर्सनालिटीज कौन रही, फेमस बुक ऑथर्स क्या रहे, वाटरफॉल्स, नेशनल पार्क। वही जो हम एमपीजी के लिए प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, तो उसके लिए अरिहंत या पुणेकर उठा सकते हो, दैट विल बी मोर देन इनफ। इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स, कुछ अच्छी पॉलिसीज, और वो देख लेना जो भी रिसेंटली अनाउंस करी गई हूँ बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी। तो अभी कुछ कुछ जैसे मोहन यादव जी ने कुछ कुछ चीजें भी कराई हैं, तो वो सारी चीजें देख लेना, है ना? ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? नो मैम। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो नंदिनी, दोबारा से इंटरव्यू देना, उसमें देखते हैं। ठीक है, थैंक यू चलो, मैम, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय।